Hello and welcome to my channel Adarshalaya, a free online teaching classes platform. I'm Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, Jamshedpur Women University. Presently, on request of viewers, we are discussing various aspects of entomology. That is, entomology is the branch of science that deals with the insects, especially for trending research areas and topics for the researchers और न्यू रिसर्चर्स इन लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया ट्रेंडिंग रिसर्च डोमेन्स और एरियाज इन एंटोमोलॉजी और इस वीडियो से हम ऑनवर्ड्स डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेसिफिक ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऑफ दीज डोमेन्स और एरियाज फर्स्ट एरिया जो था हमने देखा था दैट इज इंसेक्ट्स एज बायो इंडिकेटर ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन insects belong to phylum Arthropoda characterized by chitinous exoskeleton segmental body jointed legs complex but short life cycle followed by metamorphological development जिसमें एक से एडल्ट के बीच में एक से ज़्यादा स्टेजेस होते हैं जिनके बेसिस पर डेवलपमेंट डायरेक्ट कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है डेवलपमेंट थ्रू मेटामॉर्फोसिस देन 1 मिलियन स्पीसीज आइडेंटिफाइड इनके 1 मिलियन स्पीसीज आइडेंटिफाइड हैं जबकि 100 मिलियन स्पीसीज अभी करीब करीब और भी आइडेंटिफाई होने हैं तो टैक्सोनॉमी या सिस्टमेटिक बायोलॉजी भी इनके लिए एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया एंटोमोलॉजी का देन इंसेक्ट शो हाईली फंक्शनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस के कारण दे आर suitable to be considered as ecological bioindicators of sustainable ecosystem. Complete incomplete metamorphosis, only flying invertebrates living in all habitats of planet Earth, solitary और colonial, communicating ability आदि के कारण भी इनका महत्व और बढ़ जाता है एज बायो इंडिकेटर्स इंसेक्ट की सुरक्षा और अस्तित्व हमारे लिए बहुत जरूरी है चार मुख्य वजहों से पॉलिनेटिंग फूड क्रॉप्स रिमूविंग sorry removing waste as decomposers controlling pests and providing nutrition to wildlife इनके अलावा सिल्क डाइज लैक हनी आदि बहुत सारे इंसेक्ट प्रोडक्ट्स के रूप में भी हमारे लिए बहुत यूजफुल हैं कंसर्न की बात है कि यूजफुल इंसेक्ट्स की डाइवर्सिटी लगातार घट रही है अब देखते हैं एनवायरनमेंट क्या है एनवायरनमेंट मतलब एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस द एरिया in which we live with main components air water soil noise temperature etc कुछ भी चीजें कुछ भी इफेक्ट्स करता है डिस्टर्ब करता है इन प्रोपोर्शंस को सो दैट इज कॉल्ड एज द पोल्यूशन और दे पोल्यूट द एनवायरनमेंट बायो इंडिकेटर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके प्रेजेंस एब्सेंस या अबंडेंस खास एनवायरमेंटल कंडीशंस को इंडिकेट करते हैं बायो इंडिकेटर्स के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं richness and diversity of species, ecological faithfulness, fragility to small environmental changes, ecological fidelity, and good organism responses. Indicators की तीन मुख्य कैटेगरीज होती हैं एनवायरमेंटल एनवायरमेंट का चेंज डिटेक्ट और मॉनिटर करते हैं इकोलॉजिकल एनवायरमेंट के बायोटा के स्ट्रेसर्स को मॉनिटर करते हैं और बायोडाइवर्सिटी खास क्षेत्र में टैक्सा डाइवर्सिटी को आइडेंटिफाई और मॉनिटर करते हैं अब इकोसिस्टम जो खास जिनमें हम इंसेक्ट्स को बायो इंडिकेटर की तरह पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक्स चुनने जा रहे हैं दीज आर एग्रो एग्रीकल्चरल और टेरिस्ट्रियल एक्वेटिक फॉरेस्ट एंड माउंटेन इकोसिस्टम्स इंसेक्ट्स के मुख्य रोल प्ले करते हैं एज बायो इंडिकेटर्स टू मॉनिटर एनवायरनमेंट एज बीइंग स्मॉल इन साइज हैविंग शॉर्ट लाइफ साइकिल्स सबसे ज्यादा मिलने वाले टैक्सा हैं इनके जो बहुत सारे पॉलीफेगस होते हैं सब कुछ खाने वाले आसानी से कलेक्ट किए जा सकते हैं काफी मात्रा में कलेक्ट किए जा सकते हैं कम खर्च में और सिंपल लेबोरेटरी कंडीशंस में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन पर किया जा सकता है दो चार्ट जो यहाँ दिखाए गए हैं मुख्य इंसेक्ट्स उनके बायो इंडिकेटर्स स्पेसिफिक इंसेक्ट्स एज बायो इंडिकेटर्स काम करते हैं उनका क्लासिफिकेशन बायो मॉनिटरिंग तरीक कहाँ कैसे बायो मॉनिटर करते हैं हैबिटेट और इन पर किए गए रिसर्चर्स के काम दिखाते हैं मेजर इंसेक्ट ग्रुप्स ऑर्डर एंड फैमिली की जो बायो इंडिकेटर का काम करते हैं दीज आर द कोलियोप्टेरन्स एग्जांपल बीटल्स dipterans including midges and a number of groups hymenopterans bees and wasps isopterans termites lepidopterans butterflies moths aphids then dragonflies dimsey flies then hemipterans bugs and many more types of epts that is ephemeroptera Placoptera and Trichoptera जिनके examples हैं mayflies, stoneflies and caddis flies which serve as indicators of changes in microclimate, foraging behavior, and nesting places, reduce food availability due to use of agrochemicals and interaction with other species. Let's see one by one these. First group is the beetles, Coleoptera का family का
कैरेबिडी, स्टैफियोलिनिडी एंड कर्क्यूलियोनिडी के मेंबर्स ज़्यादातर बीटल्स के कोलियोप्टेरा के इंसेक्ट इंडिकेटर की तरह काम करते हैं. मोस्ट पॉपुलर बीटल्स यूटिलाइज इन एन एनवायरमेंटल biomonitoring are ground beetles and dung beetles. Ground beetles evaluate and identify the chronic heavy metal pollution affecting elytra of beetles, length and body size, spots and patches, changes in locomotory behavior affecting the copper accumulation or stressing or indicating copper accumulation. Then dung beetles acting as dwellers, rulers, tunnelers, accessing soil fertility by presence of toxic substances, that is the soil pollution. Dung beetles are affected by forest fragmentation. इनका abundance, species richness is the indicator of size of forest fragmentation. Thus, genotoxic effects of herbicides study करके dung beetles के dull blackish color in comparison to bright metallic natural color को करके भी हम ये बायो इंडिकेटर की तरह काम कर सकते हैं. लाइट पोल्यूशन भी ये इंडिकेट करते हैं. देन लेपिडोप्टेरन्स एज बायो इंडिकेटर्स are mainly the butterflies, moths, and wasps. Many lepidopterans are significant bioindicators on account of their sensitivity towards slightest alteration in environmental factors like heavy metal accumulation. Then, mostly around the industrial and metropolitan areas, temperature का भी impact होता है on their range shift, oviposition sites, egg laying rates, larval development, and survival rates. Anthropogenic activities have deleterious impact on biodiversity of lepidopterans, their morphology and physiology, including aphids and butterfly larvae. Ants as bioindicators. These are the universe or ubiquitous ants in all trophic levels of food wave and food chain and other ecological functions as good bioindicator of various types of pollution like soil heavy metal contamination. Then ant fairly दूसरे invertebrate taxa का भी presence indicate करते हैं. Ants are also used as to indicate soil quality bioindicators and have a key role in recovery of degraded and deforested areas and are very sensitive to human impact. Agroecosystem में some groups of ants act as biological indicator of soil condition, crop management and assessment systems for population. Bees as bioindicators, social insects में bees आते हैं. Bees can consume pollutants sorry while foraging and then pass them to the larvae and mix into the materials used to build their nests. Bees as bioindicators of environment in two ways they function: signaling via high mortality rates due to presence of toxic molecules. बहुत ज़्यादा जब बीज मरने लगते हैं तो वो सिग्नल होता है बायो एनवायरनमेंट में heavy metals या toxic substances का presence, and via residues in honey, pollen and larvae the presence of heavy metals. जो हनी के प्रोडक्ट्स हैं, बीज के प्रोडक्ट्स हैं, वो भी अफेक्टेड होते हैं ड्यू टू हेवी मेटल्स. नीचे का चार्ट शो करता है डिफ्यूजन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन एनवायरनमेंट एंड ट्रांसलेट टू honey, honeybees and honeybee products. Polluted substances also affect honey, wax and stored pollen affected by air pollution, pesticide and plant diseases. Then syrphids of order Diptera larvae accumulate various heavy metals. These flies require different environmental conditions, making these flies a good bioindicator. Then EPTs, that is mayflies, stoneflies, and caddisflies, are great bioindicators of good water quality. Mayflies sensitive to oxygen depletion, stoneflies indicate high oxygenated water, caddisflies are sensitive to water pollution. Dragonflies and damselflies of Odonata are most reliable ecological indicator in riparian condition and aquatic condition. Their presence indicates pollution-free climatic conditions. So positively dragonflies का presence अच्छे environment का indicator है. Termites are ecosystem engineers which are indicators of soil fertility through determination of soil physico-chemical parameters of termites. Termite moulds in soil and chemically infected soil with less such moulds. Termites accumulate high amount of heavy metals of all types और herbicides affected areas में इनके moulds कम मिलते हैं. इनके अलावा बहुत सारे group of insects like columbolans, springtails, aphids, then hemipterans, bugs, these giant water bugs, they serve to access water quality like high oxygen concentration, iron and manganese condition, nickel and lead accumulation, etc. Midges of Diptera
ऑर्डर आर वाइडली यूज्ड एज बायो इंडिकेटर ऑफ वाटर क्वालिटी। इनके लार्वी में बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल डिफॉर्मिटीज मिलते हैं शोइंग केमिकल कंटामिनेशन कंडीशन ऑफ वाटर। मीजेज टेम्परेचर फोरकास्ट के लिए भी इंडिकेटर होते हैं। द मॉडरेट टेम्परेचर में ये बहुत पनपते हैं। देन पेंटाटोमिडी, these are the bugs and giant water bugs, small stinked bugs, shield bugs, etc. They are herbivores, दुर्गंध छोड़ते हैं स्टिंग ग्लैंड से। इनमें कुछ एक्टोपैरासाइट्स भी होते हैं और ये सभी वाटर क्वालिटी के गुड इंडिकेटर्स होते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट ग्रुप्स इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के सक्सेसफुली मॉनिटर करते हैं, जैसे बीज, एंड्स, मिजेस, वास्प्स एंड बटरफ्लाइज। स्मॉल sound pollution indicator insects are mainly males of crickets, cicadas, locusts, grasshopper, जिनके मेल्स एडवर्टाइजिंग कॉल्स रिप्रोडक्शन के सीजन के दौरान, ब्रीडिंग सीजन में देते हैं, जो इफेक्ट हो जाता है ड्यू टू द साउंड पोल्यूशन, नॉइज और हॉर्न्स की वजह से। इंसेक्ट इंडिकेटर्स ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स लाइक एग्रो इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, forest ecosystem, mountain ecosystem can monitor the different degrees of pollution of soil, water and air of all these systems. एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम में बीटल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, मॉस्किटोज एक्सेट्रा। एसएफएम सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अच्छे कैरियर्स हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम के इंसेक्ट बायो इंडिकेटर्स मेनली ईपीटीज हैं। देन मेन माउंटेन इकोसिस्टम ऑफ अल्पाइन रीजन अभी भी काफ़ी प्रिवेलेंट है ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि बायो इंडिकेटर्स की सहायता से एनवायरमेंटल कंडीशंस को बहुत सक्सेसफुली मॉनिटर करते हैं क्लास इंसेक्टा। अगर आपको ये चैप्टर ये पसंद आया हो तो रिसर्च के लिए इंसेक्ट्स के अधिकतर ग्रुप्स जो इजीली अवेलेबल हैं उनको कलेक्ट कर